In today's video, we will discuss the EdgeBridge project. We will cover how to build it using BJTs and how to control it using an Arduino Uno. Hello and welcome. My name is Umar Farooq and I am here with my group members Umair and Ilsa Faisal. In this video, we will learn about the introduction to the EdgeBridge, its one direction and second direction functionality, the components using an EdgeBridge and its uses, the schematic diagram, the automated test bench using Arduino, PCB design, etching, ironing, drilling, the final look of the circuit and working video demonstration of our EdgeBridge. Welcome to my EdgeBridge motor driver semester project. I am going to explain what EdgeBridge are and how to control one. So what is an EdgeBridge? An EdgeBridge is a circuit that can use to control the speed and direction of a bridged DC motor. There are many ways to design an EdgeBridge, but I am going to show a simple one that can work with input voltage between 6 to 12 volts for motor load up to 2 amps. So this is the diagram. This is the motor, and S1, S2, S3, S4 is the 4 switches that control the direction of a motor, and VI is an input volts. You see the edge? This is an EdgeBridge. If we turn these two transistors on and these two off, here is the equivalent circuit. Now current can flow from your positive power supply ran through this transistor, through the motor, through this other transistor, down to your circuit ground. This will make the motor spin in one direction. How do we reverse the direction the motor is spinning? We do that by reversing the direction of the current going through the motor. If we turn these two transistors on and these two off, no current will flow from your power supply through this transistor, through the motor in this direction, through the other transistor down to ground. We change the direction of the motor. We change the direction of the motor high. What happened if we turn all the transistors on? The motor should go twice as fast and boom, yeah. So if you turn all the transistors on, you create two high current paths straight from power to ground, effectively shorting out your power supply and blowing up the transistor. Components that use in an EdgeBridge: battery, optocoupler, BJTs, diodes, and resistor. First, we take battery of 9 volt. 9 volt battery is used in a many different applications. It can frequently be seen used in a radio, wall clock, but here we use it for run our circuit and DC motor. Second component is optocoupler. Optocoupler is also known as opto-oscillator. Optocoupler is an electronic device made up of an LED emitter combined with a photodiode. There are many types of photocoupler, that is 6-pin and 4-pin. But we use 4-pin photodiode, which have same working. The uses of optocoupler act as a protection machine, ensuring that harmfully electric current cannot flow across the device. In a simple words, an optocoupler works by taking an input electric signal and converting it into a light signal using a light emitter device. Base of transistor is optically coupled with the LED, so BJT will on. So here is the diagram. There is
this is a diode, and the other side there is a BJT. When diode is on, so BJT also on. The next one is BJTs. BJT, also known as bipolar junction transistor. BJT is a three-terminal semiconductor device that consists of two p-n junctions which are able to amplify or magnify signal. It is a current control device. There are three terminals of this BJT: the base, the collector, and the emitter. Here we use two different BJTs, that is NPN 2 and 3968 transistor with a second switch, and the other is PNP 2 and 2222 transistor with the first switch that control the direction of motor. The next component is resistor. A resistor is a passive terminal electric component that implement electrical resistor as a circuit element. In an electric circuit, resistors are used to reduce current flow. Here we use 1K resistor to resist the input volt from the battery. So the next is a flyback diode. For the safety purpose, we use an add flyback diode. When a reverse current from motor comes, it will pass through the diode instead of BJT because that current can damage the BJT. And optocoupler will isolate the input signal from output signal, and the reverse current will not flow through the BJT of optocoupler because it will on when LED is on, so the reverse current will not damage the input circuit. So this is the schematic of edge bridge by using optocouplers and BJTs. So an 9-volt battery is connected to two switches. When the switch is closed, the current passes through the switch and on the LED of optocoupler. When the LED on, it will on the BJTs. BJT is a phototransistor and it is basis optically coupled with the LED. So when the light is on, BJT is also on. So it allows only unidirectional flow of current. One NPN BJT is connected to NPN BJT through a resistor, and the value of resistor is calculated by using a different formula. So here is some formula. So यहाँ पे हमने जो है BJT का डेटा शीट से हमने कुछ वैल्यूज़ निकाली है. सबसे पहले जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IC एंड बीटा गेन ऑफ रेजिस्टर. तो IC हमारे पास है 5 एम्पेयर, बीटा हमारे पास है 1000 एंड VBE हमारे पास है 5V. इससे हमने निकाला है रेजिस्टर. ये वो रेजिस्टर है जहाँ पे हमें BJT को जितना रेजिस्टेंस चाहिए अलाउ करने की ताकि करंट वहाँ तक पहुँचे. तो ये सबसे अच्छी करंट है. मतलब 1 एम्पेयर मैक्सिमम 1K रेजिस्टर अगर हम BJTs के पीछे लगाए तो हमारा करंट सबसे अच्छा जाएगा और हमारे सर्किट या मोटर की डायरेक्शन बिल्कुल सही आएगी. अच्छा, सो लेट्स कम फॉर with the working. When switch 1 is closed and switch 2 is open, the positive voltage will passes through the optocoupler. As the NPN and PNP are connected together, NPN will on and the PNP will remain off, and on the other side switch 2 is closed, so NPN will be on and current passes through NPN and then through NPN, and motor will move in a one direction. So similarly, when another switch is closed, the motor will move in another direction. Both the switches should not on the same time.
For the safety purpose, we add flyback diode. When a reverse current from motor comes, it will pass through the diode instead of BJTs because the current can damage the BJTs, and optocoupler will isolate the input signals from output signals, and the reverse current will not flow through the BJTs of optocouplers because it will only on when LED is on, so the reverse current will not damage the input. इसके अलावा अगर हम इसकी वायरिंग पे बात करें तो ये ऑक्टोकपलर से पॉजिटिव आके सीधा गया है, सीधा जो कनेक्ट हुआ है वो कनेक्ट हुआ है NPN ट्रांजिस्टर के साथ, और ये और वो NPN ट्रांजिस्टर है जो कि इस स्विच के क्लोज होने से चलेंगे, और बाकी दो जो BJTs ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहेंगे। तो ये डायरेक्शन यहाँ से, इसकी करंट यहाँ से आएगी और इसकी नेगेटिव जो है ये ऊपर से होके यहाँ पे आके हमारे मोटर्स को मूव करेगी और ये नीचे से होते हुए यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली दूसरे स्विच के साथ भी हम कर सकते हैं, अगर एक को ऑफ करके दूसरा करे तो इसी तरह ये हमारे साथ मोटर मूव हो सकती है। So this is the schematic diagram of the edge bridge by using a photo octocoupler and BJT. This is the PCB design of edge bridge circuit. So इसको हमने डिज़ाइन किया है, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा था, ये जो है यहाँ पे एक वायर नहीं हो रही थी, क्रॉस हो रही थी, तो इसके लिए हमने लगाया है ऊपर से हमने जंपर वायर लगा दिया है। तो इसको हमने प्रिंट ना करने की वजह से हमने इसको रेड किया हुआ है, मतलब नीचे लेयर पे हमने इसको प्रिंट किया और साथ में ड्रिल भी किया। तो ये दो मेरे नाम है, और यहाँ पे हमने ट्रेसेस जो एक छोटी की क्योंकि इसके नीचे आ नहीं रही थी, तो इस वजह से। तो ये हमारा टोटल PCB डिज़ाइन है, उसको हम प्रिंट करेंगे और फिर आगे प्रोसेस। सो यहाँ पे हम करेंगे ऑटोमेटेड टेस्ट बेंच। तो इसमें हम अपने सर्किट के साथ एक आर्डिनो लगाएंगे और इस सर्किट को हम कंट्रोल करेंगे आर्डिनो से। मतलब ये कि हम इनको एक ऐसे कोड दे, एक ऐसे लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम करें कि वो कुछ सेकंड के लिए एक डायरेक्शन पे जाए और फिर ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद दूसरे डायरेक्शन पे जाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेना है आर्डिनो। हमने आर्डिनो लिया और आर्डिनो में हमने 2 पिन यूज़ किए, 9 और 8। इसके बाद हमने जो है एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो का, वो हमने सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें कोडिंग करेंगे, लेकिन कोडिंग से पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन सी आर्डिनो हमने लिया हुआ है प्रोटियस में। तो हमने प्रोटियस में सबसे लिया हुआ है पहला आर्डिनो ऊनो। तो हमने आर्डिनो ऊनो यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इसमें करेंगे कोडिंग। तो सबसे पहले जो है हमने सेट में लिखने, इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे पेन को, कि मतलब हमने कहाँ पे इनपुट पेन लेना है और कहाँ पे आउटपुट पेन लेना है। अब समझते हैं कि इनपुट कहाँ पे लेंगे और आउटपुट हमने कहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले इनपुट वो होता है जो सर्किट से अंदर यहाँ से निकले, इसको इनपुट कहते हैं। और ये आर्डिनो से जो करंट निकले तो इसको हम बोलेंगे इनपुट
पेन, तो हम इसको एज अ इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ से करंट आ रहा है। तो इस यहाँ से करंट आने की वजह से हम सिर्फ 2 आउटपुट यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 आउटपुट को डिफाइन किया, जो कि इसका सिंटैक्स है पेन मोड। तो पेन मोड के बाद हमने लिखा कि 8 आउटपुट हमने लिया और 9 को भी, दोनों को हमने आउटपुट एज आउटपुट लिए। उसके बाद हम वर्ड लूप यूज़ करेंगे, जैसे हम सीपी में एंड मैन यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड लूप, क्योंकि ये लूप है, ये बार बार चलेगी, तो इस वजह से हमने वर्ड लूप यूज़ किया। उसके बाद हम लेंगे एक सिंटैक्स है कि डिजिटल राइट हम क्यों लेते हैं? डिजिटल हम राइट इसलिए लेते हैं ताकि हम इसका मतलब है ऑन ऑफ, फॉर द ऑन ऑफ, हम ऑन ऑफ के लिए हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब सबसे पहले हमने 8 को हाई पे रखा और 9 को लो पे रखा, और उसके बाद हमने ये डिले 5000 का क्या मतलब है? डिले का मतलब है कि इतना टाइम आप ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर दूसरे पे रीड करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक प्रोग्राम को रीड करें, उसके बाद इतने सेकंड के बाद अपने दूसरा प्रोग्राम रीड करने। तो इसका मतलब असल बेसिकली ये है कि इतना टाइम के लिए 8 जो है हाई रहेगा और 9 तो लो रहेगा, तो ये एक डायरेक्शन में चलेगी, मतलब 8 का जो है वो हाई रहेगा, तो इसलिए ये एक डायरेक्शन में चलेगी, और 9 पेन पे लो है, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन पे चलेगी। उसके बाद डिले आएगा, तो डिले का मतलब है कि इतने सेकंड के लिए, ये नैनो सेकंड में है, तो 5 सेकंड के लिए ये एक डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके बाद जो है ये दूसरे नीचे प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा। तो दूसरे नीचे प्रोग्राम में जो है 8 लो है और 9 हमने हाई रखा है, इसलिए कि एक स्विच जो है ऑफ रहे और दूसरा स्विच जो है ऑन रहे हमारे पास, और इसका डायरेक्शन दूसरे साइड पे स्टार्ट होने लगे। तो इसलिए हमने फिर उसको लिया है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने डिले 5000 दोबारा किया है। तो ये और हम अब ये इसको चलने के लिए हम कैसे करेंगे? इसको यहाँ से रन करें, तो ये हमारे पास देखिए ये बिल्कुल रन हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करें? इसके लिए हमने यहाँ पे करने, इसको डबल टैप करो तो यहाँ पे आएगी ये प्रोग्राम फाइल। तो प्रोग्राम फाइल के आप पे ऐसे जाने और फिर इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए हमने इस पे जाने और सबसे नीचे आके फिर इस साइड पे आ जाए। तो ये हमारे पास तो यहाँ पे एक मिनट, तो ये नीचे आएंगे, तो ये इसकी जो है लोकेशन है, ये यूज़र से लेके सी फोल्डर में उमर फारूक, फिर ऐप डेटा, फिर लोकल आर्डिनो, इस पे जाके तो ये यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे। तो यह इसको हमने सेलेक्ट करने यहाँ पे, तो इसको ढूंढना है हमने ऐसे, फिर सी पे जाएंगे, सी के बाद जो है हमने ढूंढना है, इसको ढूंढने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो फिर अगर हम प्रोग्रामिंग में कोई भी चेंजेस, किसी भी किस्म के चेंजेस करें, तो वो ऑटोमेटेड यहाँ पे चेंजेस हो सकती है। तो अभी के लिए हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने अपने सर्किट को जो है किया है कि मतलब ये आगे कैसे जाए और पीछे कैसे जाए विद अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब 5 सेकंड के लिए एक साइड पे, 5 सेकंड के लिए दूसरे साइड पे। तो चलो अभी हम चेक करते कि हमने ये क्यों लिया है। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए ये अभी चलना स्टार्ट हुआ। एक डायरेक्शन पे इसका जो है थोड़ा सा वो कम है, इसलिए स्लो जा रहे। तो 5 सेकंड के लिए शायद इस साइड पे चले और 5 सेकंड के लिए फिर ये दूसरे डायरेक्शन में स्टार्ट होने लगे। तो ये देखिए ये सेकंड डायरेक्शन पे स्टार्ट होने लगा है, लेकिन बहुत स्लो है, तो इसलिए शायद आपको लोगों को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हो रही है एक डायरेक्शन पे और दूसरे डायरेक्शन पे। तो ये है हमारा ऑटोमेटेड टेस्ट बेंच, हमने आर्डिनो ऊनो यूज़ किया। तो ये आपके सामने प्रेजेंट। Ironing overlapping printed PCB design onto copper board. Step 1. Clean the copper board with a PCB cleaner. Step 2. Place the design onto the copper board. Step 3. Iron over the design with a foam
pressure and circular motion. Step 4. Let the board cool down. And here you have it, ironing overlapping printed PCB. Etching. Now take plastic container and add 100 grams of FeCl3 to fill it water. Place the ball inside the solution for 15 minutes. Keep stirring the solution for every 2 minutes. Check whether the board is completely active. If the process is not completed, tip the pour again. So this is the final look of our circuit and after soldering, and this is my name Umar Farouk and registration ID is 221716. So working video, circuit checking. So this is in the one direction if we turn on the one switch, and now we turn the second switch for the reverse direction. So this is the in reverse direction. So it means our circuit is in a run form.